Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GS boy. Okay, देखो students, आम last class से पढ़ी थिलु what is called magnet, what is called pole, what is called magnetic axis, what is called magnetic meridian. Okay, then what is called magnetic moment. So पढ़ाई थिला और पढ़ाई थिला Coulomb's law of magnetostatics. पढ़ाई थिला magnetostatics रा Coulomb's law टा. So आज हमें देखिबा गोटे न्यू टॉपिक पढ़िबा. ओके, कूलम्स लॉ टिके टिके पढ़ी देबा तब न्यू टॉपिक को जीवा. देखो कोन थिला, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स. एटा टिके पढ़ी देबा तब आकु जीवा हला. मैग्नेटोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स फार्मूला कोन थिला देखो, दैट इज F वेक्टर इज इक्वल टू K इनटू ओके K इनटू M1 इनटू M2 बाय M1 into M2 by R square. Okay, formula थिला. This is called Coulomb's law of magnetostatics. Okay, equation 1 दे दम. इटी SI system रे कोन अब formula लेखो for SI system रो. Okay, for SI system पाई, for SI system सबले मन रखो SI system पाई ए K रो मूल्य कोन होए, K रो मूल्य होए μ0 by 4 पाई. देखो स्टूडेंट्स, K is equal कोन, K is equal to μ0 by 4 पाई. Okay, इक्वेशन रे पुट करो. देन इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 कोन हला, इक्वेशन 1 becomes that is F is के जर पुट करो, F is equal to μ0 by 4 pi M1 into M2 by R square. एटा को सिस्टम रे कूलम्स लॉ टा मैग्नेटोस्टैटिक्स रो, दैट इज SI सिस्टम पाई. इक्वेशन 2 टा कोन, इक्वेशन 2 is the formula of expression for कोन कूलम्स लॉ ऑफ magnetostatics in SI system. SI system में formula F is equal to μ0 by 4 pi M1 M2 by R square. Okay students, next हमें देखिबा for CGS system. For CGS system पाई, for CGS system, CGS system में कोन formula देखो. For CGS system, for CGS system में formula है देखो K रो मूल्य 1 हुए. ओके, K रो मूल्य 1, इक्वेशन 1 रे पुट कर दियो. इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 टा दिया थिला, इक्वेशन 1 becomes कोन हबो, इक्वेशन 1 becomes F is equal K रो मूल्य 1, that is M1 M2 by R square only. This is called CGS system और फार्मूला कार फार्मूला कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स रो CGS सिस्टम में फार्मूला देखो. इक्वेशन 3 दे देबो. ओके, F is equal to M1 M2 by R square. K रो मूल्य के 1. ओके स्टूडेंट्स, द कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स. This is for CGS system, this is for SI system. Okay students, next हम देखो न्यू टॉपिक. न्यू टॉपिक रो ना हला मैग्नेटिक फील्ड. देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड is defined as the region, defined as the region of the magnet, region of the magnet in which माने सेठी in which magnetic influence on force कोई पारा, magnetic influence can be realized और हम कोई परिबा एक्सपीरियंस. अब हम कोन कोई परिबा एक्सपीरियंस देखो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द डिफाइंड एज द रीजन. व्हाट रीजन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन. ओके, रीजन रे कोन हबो ऑफ द मैग्नेट इन व्हिच से जगह इन व्हिच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी रियलाइज. हम फील करि परबा, कोन फील करिबा, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी रियलाइज और फील और एक्सपीरियंस. ओके, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. Magnetic field is defined as the region of the magnet in which magnetic influence can be realized or experienced. This is called magnetic field. Okay, next time देखिबा magnetic lines of force. Next very very important topic, short question, that is magnetic lines of force. देखो magnetic lines of force एटा डेफिनेशन कोन हबो. The magnetic lines of force is defined as, लिखी दिया, magnetic lines of force is defined as the path माने कौन रास्ता, defined as the path
defined as the path which is straight सीधा ही पारे straight or curved in which a unit north pole would freely move in an magnetic field. Freely move in a magnetic field. Simple definition. Magnetic lines of force is defined as the path. Path মানে কোন রাস্তা? Okay, path defined as the path which is straight or curved মানে सीधा भी হতে পারে বঙ্কা হতে পারে which is straight or curved in which কোন হবে a unit north pole would freely move in an electromagnetic field মানে সে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রে গোটে কে মুভ করিব গোটে यूनिट north pole টা freely move করিব সে রাস্তা রে that path is called কোন that path is called magnetic lines of force. Okay students, one second দেখো magnetic lines of force is defined as the path which is straight or curved in which a unit north pole would freely move in a magnetic field. Okay students, next আমি দেখিবা properties. Next, properties of magnetic lines of force. বা properties কই পারা কার properties magnetic field magnetic lines of force are properties. Properties and 3 mark question what is called magnetic lines of force are properties 3 marks. The first property is the that is magnetic lines of force are directed away মানে বাহারি জীব directed away from north pole okay and directed towards to south pole. দেখো এটা হচ্ছে very simple. Okay, দেখো magnetic lines of force are directed away from north pole মানে north pole ରୁ ବାହାରିବା ଆଉ କୋଉଠି end ହେବ directed towards south pole ରେ end ହେବ. Okay students, ଏମିତି କହି ପାର magnetic lines of force start from north pole and end in ମାନେ ଶେଷ ହେବ end in south pole. Okay students, ଦେଖो first one magnetic lines of force are directed away from north pole and directed towards south pole. Okay students, next number 2 point the tangent tangent माने गोटे सर्किल जो हमें सर्किल माने 90 डिग्री ड्रॉ करिवो दिस द tangent देखो दिस द tangent the tangent at any point on the magnetic lines of force gives the direction of magnetic field intensity. Give the direction of magnetic field intensity. Direction देबो এটা simple देखो the tangent at any point on the magnetic lines of force give the direction of magnetic field intensity. B vector जोटा B vector. Okay, तो एटी कोन अब डायग्राम থেকে দেখি দিও. Suppose this is magnetic lines of force. Okay, a P point suppose tangent तैयारी करो this is the tangent এটা কোন শো করিব direction of B vector মানে কোন magnetic field intensity. দেখো the tangent at any point on the magnetic lines of force gives the direction of কোন magnetic field intensity. Okay students, diagram this is the diagram এটা কোন এটা হচ্ছে magnetic lines of force. This is called magnetic lines of force. और B মানে হচ্ছে magnetic field intensity. P মানে হচ্ছে পয়েন্ট এই পয়েন্ট টাইম তৈরি করা গলা এটা কোন ডাইরেকশন শো করিব direction of magnetic field intensity show करिवो. Okay students, next time देखिबा नंबर थर्ड पॉइंट. देखो नंबर थर्ड पॉइंट देखो two magnetic lines of force never intersect each other. देखो students, very simple. Two magnetic lines of force never intersect each other. ता माने कोन सब देखमती जीवो गुटे परे गुटे तळको जीवे देखमान लाइन्स ऑफ फोर्स किंतु केते ठीक किंतु एटा केमती हेबेनी देखो माने कोलिजन हे माने इंटरसेक्ट करिवेनी देखो बा मर्ज करिवेनी रंग देखो एटा ठीक. Two magnetic lines of force never intersect each other. Okay students, next हम लास्ट पॉइंट देखिबा. Next number property लास्ट पॉइंट IV.
IV देखो, that is the number of, लिखी देबा, the number of magnetic lines of force, the number of magnetic lines of force per unit area is directly proportional to magnitude of magnetic field intensity. That is B vector, intensity B vector देखो. The number of magnetic lines of force per unit area is directly proportional to magnitude of magnetic field intensity. ता माने कोन? That is number of magnetic lines of force by area देखो. Number of magnetic lines of force by area, एटा force. Number of magnetic lines of force direct proportional कोन हबो? Magnitude of B vector. Magnitude of B vector, एटा जे formula. But first third IV properties, the number of magnetic lines of force per unit area is directly proportional to magnitude of magnetic field intensity B vector. So this is the formula, number of magnetic lines of force per area proportional to B vector. Okay students, so this is all about properties of magnetic lines of force. Next time we देखिबा what is called magnetic field intensity. Next topic, what is magnetic field intensity. That is B vector, symbol देखो ना, B vector. Definition लिखी दे, that is magnetic field intensity. Intensity is defined as the force experienced by a unit north pole placed at that point. The simple definition. Okay, magnetic field intensity is defined as the force experienced by a unit north pole placed at that point. Formula कोन B vector, that is force by pole strength বা pole কই বার force by pole strength. দেখো এটা যে formula, SI unit কোন হবো? SI unit of B vector. What is SI unit কোন হবো? দেখো force by pole strength, force কোন হবো? Newton by what is pole strength? Ampere into meter am. So कोन हला, that is Newton ampere inverse meter inverse. This is the SI unit of magnetic field intensity. कोन? N for Newton, A for ampere, M for meter, Newton ampere inverse meter inverse. Okay students, next time देखिबा what is magnetic dipole. Okay, next topic, magnetic dipole. What is called magnetic dipole? Very simple. देखो what is called magnetic dipole. Magnetic dipole माने होची देखो, it is the combination of two okay equal and opposite magnetic poles situated very close to each other. Therefore, very simple definition. This is the magnetic dipole. What is magnetic dipole? It is the combination of two equal and opposite magnetic poles कोन हबो situated very close to each other. यदि पाखापाखि थिए माने कोन, that system is called, that is called what? Magnetic dipole. It is the combination of two equal and opposite magnetic poles situated very close to each other. This is called कोन? This is called magnetic dipole. Next topic, that is axial line. What is axial line? A line joining the two poles of the magnetic dipole. Magnetic dipoles is called
is called its axial line. देखो axial line टा a line good line टा a line joining two poles, a line joining the two poles. Okay, a line joining the two poles of the magnetic dipole is called its axial line. ता माने कोन देखो, so this is north pole, this is south pole. a line टा कोन, a line टा हला this is x axis, this is called कोन line, this is called axial line. देखो स्टूडेंट दिस axial line बा horizontal line कोई पारो, एटा साउथ पोल दिस नॉर्थ पोल. ए लाइन टा जो ए लाइन रो ना कोन, ए लाइन रो ना हला axial line. कोन पड़बे ए लाइन रो ना, दैट इज axial line. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें देखिबा इक्वेटोरियल लाइन. व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन, a line passing through midway, mojita midway between the two poles, a line passing through midway between two poles and perpendicular to its axial line. Perpendicular to axial line कहीं पर, perpendicular to axial line is called equatorial line. Equatorial line देखो, a line passing through midway between two poles and perpendicular to axial line is called equatorial line. ता माने कोन, ए नॉर्थ और साउथ पर मझी पॉइंट देखो मिडवे सेंटर ओ कहीं पर, ए ओ रे कोन है वो लाइन टे पास करिबा देखो, गुड दिस द लाइन, एटा y एक्सिस, एटा कोन दिस लाइन इज कॉल्ड, एटा perpendicular दिस 90 डिग्री, perpendicular to axial line 90 degree देखो, ए लाइन ना हला दैट इज व्हाट इज equatorial line. Which line? This is called equatorial line. देखो, this is called equatorial, it is axial line, this is equatorial line. Okay, this is the axial, this is the equatorial line. Equatorial line. Okay students, next class से पढ़िबा हमें बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा नेक्स्ट क्लास से. देखो बार मैग्नेट दुईटा केस अछि, एक्सियल लाइन रो अछि, इक्वेटोरियल लाइन रो केस दुईटा अछि, सेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, जदि क्लास जदि भल लागुछि माने काइंडली समस्त को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो. ओके स्टूडेंट्स, जदि वीडियो भल लागुछि समस्त को शेयर कर दियो. ओके स्टूडेंट्स, और समस्त कमेंट करिबटा भूलिबे नहीं, जदि जो टॉपिकटा बुझी हलानी माने कमेंट रे जणा हो. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट मु आपको वीडियो बने पारिबी से रिलेटेड. ओके स्टूडेंट्स, बाय.